और बहुत कुछ होने में इतना सा फर्क है एक बार सोच के छोड़ देने में और लग के कर दिखाने में। मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में ये अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन के कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी। ये एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, ना नकुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और 7वें आसमान में फर्क बस इतना सा। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन ही नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क। धूप छांव में फर्क बस इतना सा। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया। Good afternoon, everyone. Welcome to our the special edition hosted by management team of Franchise India, Mr. Gaurav Maurya, Chairman at Franchise India Group, and Ms. Sonia Chaudhary, MD at Franchise India Brands Limited. Today we bring a great brand, Batido, which is from Bihar, and currently they are having 12 plus branches. So, to know more about the opportunity, I would like to invite Mr. Nikhil, the CEO of Batido. But before that, I would like to introduce Mr. Anand Agarwal, heading the entire East region of Franchise India. Over to you, Anand, sir. Thanks, Amrita. Welcome to all our investors who have been joining regularly 12 o'clock every day, and all the panelists and the brands who have joined us today. I can see a lot of investors joining from West Bengal, very Subhanova also. I know today is a big day, auspicious day for all the Bengalis. Very happy New Year to you. Subhanova also to everyone. Subhanova also, Devaji, welcome. Thank you, Anandji. So, before we start, two chosen opportunity for the day, both from the F&B industry. I would like to give you a bit of a background of Franchise India and why F&B industry we believe is one of the most scalable and franchisable opportunity for our investors. So friends, Franchise India is being 25 years in this industry, helping investors educate, help them choose right businesses, and help them connect to the brands which suits to their markets, suits to their risk appetite, suits to their investment, and that's what we've been doing for 25 years. This webinar is also endeavor toward the same direction. And F&B industry as a whole, if I speak, F&B industry is the fastest and the biggest franchise industry across globe, and same is it in India. The brand that we all know, the biggest brands that we all relate are the Domino's and KFCs of the world. They're all franchise. So yet again, we have brought two F&B brand, primarily from East India, looking to expand in East India. They are first-time franchisor, but they took their own time in terms of stabilizing business, building their supply chain, building the right formats, and now they are ready to scale. So before, while I can see
Nikhil ji is about to join. Nikhil ji is from Batido, introduced by Amrita. We have Mr. Deboji, who has joined us from brand called Calcutta 64. So as the name suggests, this brand's from Calcutta, started about 7 years back, and the name derives its name from the pin code they started their first outlet with. So the name still remains there. There's one of the, I would say, the best coffee cafe you can look in Calcutta. Whenever you're in Calcutta or you search through any social media website or Zomato, you will find one of the leading coffee cafe in Calcutta. The name comes as Calcutta 64. And Debojit happens to be the co-founder for this brand. He comes from a great pedigree from an IIM background and working in corporate, and then he moved into F&B, making it a full-fledged career for himself. So great. I think Debojit would like to hear from you. Welcome once again. And please take us through your journey, the opportunity that we present today for our investor. Over to you, Debojit. Thank you, Anandji. Good morning to everyone. So as you have said that we started off back in 2016, and it was merely a 200 square feet space. And from there on, in 2018, we moved on to a bigger space, 2,000 square feet area. And from 2018, we could cater to a strength of 70 plus. So it was earlier only a 14-seater. So from 2018 onwards, the journey has been smooth. And for the last couple of years, last 3 years to be specific, we have been doing 3 CR plus revenue-wise. Once again, sorry, Debojit, do you want to play the PPT or you want me to do that? I can share the PPT. You can do that. You can do that. Yeah. So you can continue. In the meanwhile, I share the PPT. Sure, sure. Friends, while we continue with the presentation from the brand, please use the Q&A box given there for all your queries. Post this presentation, we will be taking up this query on your behalf with the brand. So feel free to post all your queries in the Q&A box. Thank you. Yeah. So basically, the idea of opening the cafe stuck in, in 2013 when I visited Hard Rock Cafe in Maksud, Bangalore. From there onwards, it originated, and so we started the cafe at a space only. We have got our own space in Salt Lake, Kolkata. And as I've said, that last 3 years have been great for us, and we have been doing about 3 CR, more than 3 CR as a brand revenue-wise. Out of that, I would say out of that, 90% would come from the dining business, the offline business. 10% would be aggregators like Zomato and Swiggy. And we have started our own delivery model. So we are delivering to our existing clients, new clients across Kolkata. We're not charging anything for that. Right now, we have got a strength of 30 people. The split would be 14 people on the floor, 16 back at the kitchen. And the menu is very wide and vast. For a cafe, people might get confused that it would only serve beverage and some finger-licking, finger foods. But whereas we're serving everything, starting from pizza, pasta, steaks, chilo kebab, sizzlers, bakery, everything is there. So it's a mix of both the worlds. It's a hybrid scenario of a cafe and a restaurant. So fair bit of idea how the cafe, just a second. So Calcutta 64, the customer base has grown many folds in the last couple of years, and people like the food, the ambience. Some of the favorites are the prawn in chili lemon sauce, the steak, sizzlers, pizza. So we have recently launched our own wood-fired oven. That's about a couple of months back, and we have been seeing rave reviews on that as well. So apart from being in the market for last 7 years, for the wood-fired pizza, we are quite excited, and
our USP is that we have, built the oven from the very scratch on our own, and it's a purely wood-fired oven. So it's not a. If you go to any other wood-fired joint, you would come across ovens which are, hybrid in nature. So people would use gas as well as wood-fire. So whereas we have been using only wood, and in the last 1 month itself, we have seen a revenue of about close to 1 lakh. So that's quite a staggering figure, and we are pretty much hopeful on that. So apart from that, many other dishes which are absolutely lip smacking, I would say, starting from Italian, Mexican, and if anybody wants to work from the cafe, work out of the cafe, so there is free Wi-Fi accessibility for the internet addicts. And as I've said, that our employee strength right now is about 30. And we as a brand, we have been focusing on the marketing of Calcutta 64 from the very word go. So if you see our social media presence, we are there on Facebook, Instagram, TripAdvisor. So together, we have about 35,000 people following us on social media. We are very active over there. We try to curate viral contents every quarter, and we succeed. Last time around, last year, we did a couple of such activities, and then we uploaded them on internet. Whatever we do offline, it is meant for social media. We upload them afterwards. So there has been a blend of both online and offline scenario. The last video I'm talking about, I can share some of the links with you on in the WhatsApp group. The last video garnered about 1.5 million views, and the previous one about 800K. So that's the kind of marketing we do as a brand. And right now, Calcutta 64, as per Google and Zomato, we are amongst the top 10 cafes in Kolkata, and that's been for quite some time, for last almost 3 years now. And we also got featured in I Am Calcutta's Case Research Center. So we have a case study over there. So if you're paying a visit to the portal, or you can just look it up on Google, you need to type Calcutta 64 and space I Am Calcutta. You'll see the case study, and we are possibly one of the only owner-operated cafes across India to be there in any of the IIMs as a case study. So that's quite a feat for us. And right now we are looking for a space down South Kolkata, and couple of spaces we have shortlisted. So one more outlet is going to get rolled out in a quarter's time. So we are eyeing before Durga Puja this year. So that's how it is. Yes. So if you look at the PPT, so this is what we serve. So that's pretty much about it. And this is the co-founder's profile. On the left, this is my elder brother, who happens to be one of the co-founders along with me. So together we have about 30 years of corporate exposure. So these are the stats we can go through. Yeah, this is the photo model for Calcutta 64 and outside India. Yeah. So, Mr. Devjit, I would like to add here some more content. Basically, if you look at the industry
dynamics Yeah. of cafe industry, right? So now, if Right. you look at the cafe evolution in India, it was hardly started basically 3 decades ago. So starting with like barista, coffee day, and other international chains. But if you look really in the market, uh, where we are as a nation, where we are, do we have any basically domestic or a national brand who can represent basically international markets? We don't have any. So Kolkata 64 can be the first one. That's from India, and this is the means like which you can compare with the international brands. Yes, definitely. So Yeah. as of So now, that's opportunity quite huge, and plus other cafe chains, they have, if you look at their investment criteria, their investment is very high compared to Kolkata 64. Plus, if you look at their revenues compared to Kolkata 64 performance each is basically at least 2x of their performance. So basically, that gives a right positioning in the market and very good value proposition for the investor, where your chances of success is 4% higher as compared to the other brands, And if you start a business, cafe business, standalone business, it takes a lot of energy, efforts, and plus it takes at least 10 years to build a brand. Plus, you have a very high risk of failure. That's around 200% of failure rate. And that is industry stats. People can see and see themselves. They can do Google research on this kind of cafe categories. Like 200% businesses, they fail in next first 3 to 5 years. But so Calcutta 64 is bringing that opportunity that you don't have any major risk. So it's a try and tested, very successful business model where you can see basically higher revenue sales from the first month itself. Plus, brand has already created the market for their audience. So that's a lot of advantage that directly can be transferred to the franchisee outlets, because the taste, the product, and it already has a very high rating on social media platforms. Apart from this, I think Mr. Devjit, he also has his own social media channel, and he has a quite good audience on that. So on that basis, I think Mr. Devjit can add some more content. Yeah. So Devjit, would you like to add some yeah. more? So apart from the cafe social media handles, me and my wife, we both have got a YouTube channel and a Facebook page. We do daily blogging, and we have close to 2 lakh subscribers on it. So it translates to a lot of conversion that we have seen over the years. Mr. Ashok. Yeah, absolutely. And now, if you look at the industry drivers, basically growth drivers for India. So if we go back to like 10 years ago, 20 years ago, and among ourselves, even Mr. Anand, you can see like 10 years ago, your frequency to visit cafes and restaurants compared to today, I think it could be like 10x higher. Right? Same thing, like I can compare myself, like my frequency of going out for eating, it was a very low. But if you look at the international markets and Indian markets, so the trend of eating out is increasing day by day. But still, as compared to the developed nations, including your US, China, Singapore, Thailand, we are at very low. We are basically, our average is turning to be like 4 to 5 times in a month that people prefer to go out. But the trend is changing because of urbanization, because of employment, basically your working population is increasing. So these are bringing like more towards eating out habits. So of course, market is again evolving for the demand side, but India has the right audience for all sets of commodities that we bring in. So Calcutta 64 now is bringing the opportunity for franchisee partners to operate own and operate. So it's a franchisee-owned, franchisee-operated model where all the investment has to be done by the franchisee partner. Your operating expenses, including your rentals, staff expenses, utility, and day-to-day operations will be managed by the franchisee.
And local marketing, yes, of course, will be done by the franchisee partner because he has to pull enough audience to the cafe. But in terms of your local marketing, brand will support completely in terms of content, material, your local marketing. So that all the material marketing content will be provided by the Calcutta 64. Even for social media marketing, all the content and creatives will be provided by Calcutta 64. So, and franchisee, we see like within like 1.5 years to 2 years, franchisee will be fully, they can recover their money and they will be profitable from the year one itself. So that's the biggest advantage. Second thing is basically apart from your operations, Calcutta 64 is providing you a head chef, trained head chef. He will basically work with the franchisee partner to run their cafe into day-to-day operations. So he will support you in terms of admin staff plus your as a head chef. So that is the all cost will be taken care by Calcutta 64. So that is also very support and means that is going to be the biggest support for the franchisees, because franchisees will have always the problem of staff, because this industry has a very high iteration rate. So franchisee need basically frequent support in terms of hiring and training the staff, because we need to maintain the quality of the Calcutta 64 plus the service standards. So that will be taken care by your admin head, that will be provided by Calcutta 64. Yeah, please, can we go to the next slide, please? Yeah, so now coming to the services, so yes, cafe is going to have a full seating capacity, plus franchisee can do order deliveries through the online aggregators, plus you will get the support from online orders from the brands. They will tie up with these online aggregators to promote your cafe in the desired basically your taxes. So investment here is total is around 1 crore that you can expect, and franchisee fees is 50 lakh. So now franchisee fees 50 lakh basically. So the payment terms are 25 lakh rupees of franchisee fees will be paid at the time of sign up, and remaining 25 lakh will be paid into 5 equal installments for 5 years. So each year basically to pay 5 lakh rupees franchisee fees. Royalty to the brand is 7%. So franchisee payback period of break even you can say is less than 2 years, and agreement the period is going to be 5 years. And if you look at the ideal locations fit for this brand, yes, of course, your premium market, high street market, malls, corporate hubs, airport locations, and hospitality clusters. These are going to be very attractive locations for our franchisee stores. Please, next slide, please. So ideal partner profile we are looking at, basically we are looking for franchisee and franchisee operators. So of course we are looking for operators who has basically good understanding of the market, plus who have the understanding of the F&B and cafe industry, plus who can run apart from investment, who can basically invest time in the business, because this of course very basically intensive population, basically intensive work. It requires basically your involvement really at a high level. So we are looking for the people who have the energy to invest time and money in the business, and so they can be a good partner profile. Yeah, please can we go to the next slide? Yeah, so that's our target. So target first, we are looking at the eastern region first phase, and then India expansion will start in the later stage once we have presence in the eastern region. Yeah, so Devjit, over to you. You want to add some specificities here for our expansion plan?
Okay, so our target basically in Kolkata, companies bringing their own outlets. So apart, rest of the West Bengal is open for your franchisee-owned, franchisee-operated cafes. Apart from West Bengal, we are open for the entire northeastern region, including your Odisha, Bihar, Jharkhand, and whole northeastern region. And the third stage will be your pan India stage. Please. Next slide, please. So what is the roles and responsibility? Of course, if you look at the roles and responsibility categorized by the franchisee partner as well as by the brand, so there's equal distribution. So equal distribution means brand will provide you the complete support and hand-holding to run your cafe throughout your tenure. So this is not a one-time support just to set up a cafe and then hand over the cafe and then basically you run on your own. But that is not the case here. Calcutta 64 is going to provide you the consistent support throughout your tenure. So with this, I will end the presentation. Thank you very much. So Anand, thank you, Ashok. Sorry for asking you to join while you are traveling. I know. So thanks for making it. So for the benefit of our audience, I'll just try to put it in very simple. This is a cafe format developed about 7 years back. They started from Calcutta, Debajit and his elder brother, and they started with a 200 square feet outlet. And from there on, they grew to a larger format, which is 2,000 plus square feet outlet, again in Salt Lake, one of the poshest locality of Calcutta. And this cafe basically addresses the millennials, the young ones who are hooked up to coffee and who are hooked up to social media. So these are people who come and the high rating they have got from various food platforms. They are able to have that repeat customer. And now they have stabilized the, I would say, business model, the supply chain, the operations. And because of the background, Debajit's background and being from the corporate and from IIM, so that brings a lot of capability and efficiency in the business. And now they want to share their success story with all the franchisee who are looking to take up in the respective cities. So just to understand the breakup, Debajit, I would like to again come back to you. What we saw in a presentation, we are talking about a 1 CR of investment. Right. So can you just give me an idea what is the breakup of this 1 CR? Breakup is 50 lakhs of franchisee cost, and the rest of the 50 lakhs would be to the setup cost. So this setup 50 lakh, while I understand this 1 crore, that means 25 lakh rupee of franchisee fees payable in 5 installments, which are so told. Right. So that upfront payment would be 25 lakhs, one go. Okay. Rest of the 25 lakhs divided in 5 years, 5 lakh each, and 7% of royalty each month. And the rest of the 50 lakhs, which we have discussed, it can be either it can range between 40 to 50 lakhs based upon the location, the rent. If it is a 2,000 square feet area, if it is less than that, more than that, it varies. Okay. So this 50 lakh will include the entire interior and all the kitchen equipments? Yes, definitely. This can cover in order to set up a 2,000 square feet cafe, I would suggest a fund of about 30 lakhs is more than enough. But then again, we have kept the costing on the higher side for any unforeseen events. Okay. And and I can see in your presentation there were 3 formats we can see. There was a cafe, takeaway, and I think there was some small format also. So one is dine-in, where the customer comes to the cafe, walks in. That is there. So that is that becomes 90% of our revenue format. And then there is the aggregator sales comes through Zomato and Swiggy, and there is home delivery, which is the other model, or takeaway. So these are integrated format, or like you have separate formats and you're these are all integrated. So
So one cafe will have all the three options with it. Yes. It will be integrated through the point of sale, the POS. So, for example, we have been using Paid Puja as a software, so we have integrated all these services, and so you could going forward, we would incorporate Zomato and Swiggy as well. As of yet, they are not being incorporated in our point of sale, so that is done separately, browser based, so that we can take offline. So that is not a challenge. But for a joint, we have been doing delivery, takeaway, and obviously dining, apart from the aggregator model. Correct. So what, just for the understanding, current outlet that you're running successfully, Yeah. what are the sales, if you can share some sales figure, what kind of profitability and margins we can expect? Definitely. And what kind of online offline mix you have in the sales? Correct. Online offline mix is about 90 to 10. 90 is obviously offline dining. 10% would be the aggregator business, which would also include home delivery. So, for example, month-on-month basis, we do a offline sale of on an average about 27 to 28 lakhs, and aggregator business would be about another 4 lakhs. So that takes us to about 30 lakhs plus. But during the month of festivities like Durga Puja, Christmas, we can see a growth of another 5 to 6 lakhs in offline sales. Okay. Yes. So we are talking about a sale of 3 CR annually, 3.5 CR, more than that, 3.2, 3.3, with a profitability margin of about 25 to 30%. Okay. Yeah. The healthy margin, I mean. Yes, it's a very healthy. 90 lakhs is a healthy margin. Yeah, definitely. And since we are basically a cross between a cafe and a restaurant, that's why we have a huge menu to offer to the customer. That's why each ticket size is averaged at about 800 rupees if a couple visits. Okay. And what are the operational hours for this cafe? It starts at what? It starts at 11:30 in the morning, and we take the last order at 10:30 at night. Okay. And if I have to ask any competition, what is the competition you have in Calcutta or East India, which investors should know? Yeah, see, if you see the cafe market in Eastern India, it's slowly going up there. It's taking a shape. Again, I've spoken of South Kolkata as a market because we are eyeing that particular area for our second outlet. So southern part of the city, the market is already developed. In the northern part where Salt Lake falls, the market is slowly developing. But the region as a whole, apart from Kolkata, I mean, I would say it would take another 3 to 4 years to see any kind of competition as of yet. If you see, tier 1 cities like tier 2 cities like Bhubaneswar or even Guwahati, we don't see a good hangout place. We don't see a good cafe where you could have the option to have good coffee as well as lunch or dinner. So Ashokji was talking about the chains, the likes of CCD and baristas. Baristas, I would say they have become extinct in the market today. And the same, I think, goes for CCD as well. CCD is obviously there in the market, but they do not have that much of variety when it comes to offering the customer. So I would say in the eastern part of the country, we have been seeing owner-operated cafes with good options to eat, where the ticket size can be justified. So for competition, I would say that I don't think that we have that much of competition in the market as of yet, because we keep on introducing new things every year. So as I've said before, that we have introduced the wood fire oven, which is a very rare thing in the eastern part of the country. And in Kolkata, I would say apart from us, only 4 or 5 joints are doing wood fire, and they are specifically pizza-driven brands. So for us, we are a cafe, and this adds to our feather, right? Great. So I think I'll just take a few questions which I can see. I think this is a question from Minomoy Pal about franchising cost. Franchising cost we already answered. It is 50 lakh rupee. 25 lakh rupees to be paid initially, and the brand is very confident. So there's
split the another 25 lakh into 5 years of agreement period. So you pay 5 lakh rupee each every year. Then I can see again the same franchisee fee. So friends, like while franchisee fee seems to be high, but you have to understand the business model and the economics. This is the highly scalable, high profitable margin product business, and the format that they have developed with a 3 CR of annual sales and a 90 lakh rupee of bottom line. I think it's a great ROI business. So Totally. I mean, if you go to any established brands like I would say CCD or any other brands, first of all, they would charge you more than that in order to set up the entire franchisee, the entire cost and everything. For example, likes of KFC, Pizza Hut, they charge a bomb. So they charge about 3 to 4 CR as an investment. So whereas we can translate this investment into good ROI. So we as a brand, we have been doing more than 3 CR year-on-year basis with a very healthy profit line of 30% on an average. So that matters the most. What is your top line? What is your bottom line? So that is the thing. Correct. So I will take the last one. I can't see the name, but what he's trying to understand: do we help in getting licenses? What are like fire license, health, medical, any license? Definitely. Yeah. So you will be helping them and assisting Yes, with license. we have our own legal team, and they can obviously dive in and help in over here. And the final question from my side: are we only looking for FOFO, or we are open for FOCO in Calcutta, since you have operations running in Calcutta? In Calcutta, that would be a little difficult, but then again, we are open to discussions. Okay. Thanks. Friends, if you have any more questions, please feel free to write, and our team will get back post this webinar. Our Franchise India team would be locally available to take up this with the brand for you and connect as and when required. So, Debojit, the last message from your side. Yeah, so Calcutta 64 is a great brand, and we have been doing business for the last 7 years, ethically, honestly, and we see a vast potential in the days to come. So whoever walks in, joins our hand, will not be disappointed. That's it. Yeah, thanks. Amrita, over to you. Yes. So again, I would like to invite Mr. Nikhil ji, the director of Batido. Nikhil ji? Anji. Ji. So I would like to again request you to take it forward for Nikhil ji. Yeah, so Nikhil ji, you're Yes, there? sir. So Anand ji, can I drop? Yeah, thank you, Debojit ji. Our team will get back to you. Thank you, and all the best to Nikhil ji as well. Have a great day ahead. Thank you, sir. Thank you. Take care, everyone. I think Nikhil ji is logged from some different ID, I think, seemingly. So I can only see Amrita. He has lost his panelist this thing, so I have shared my ID with him. No worry. So welcome, Nikhil ji. Friends, this is another brand which has grown from a city called Patna in Bihar, and they started about 5 years back. It's another brother duo who started this brand. और पहले हम जो देख रहे थे वो कैफे देख रहे थे, दो हाईली कॉर्पोरेट के लोग, दो भाई मिलके उन्होंने स्टार्ट किया. अब ये दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने हाथ से इस बिजनेस को बिल्ड किया है फ्रॉम पटना, एक छोटी सी शहर से, और आज ये 18 आउटलेट चला रहे हैं 4 स्टेट्स के अंदर. So without much, I would ask Nikhil ji to lead this opportunity. अपने बारे में कुछ डिटेल्स शेयर करें and how this can be a great opportunity for investors. हाँ निखिल जी. And presentation है आपके निखिल जी? मैं इसको शेयर प्रेजेंटेशन शायद सर मैं आप शेयर कर ले तो ज्यादा अच्छा रहता है. आप स्टार्ट रखें, मैं शेयर करता हूँ. जी. तो मैं स्टार्ट करूं? आप कंटिन्यू करिए. मैं So hi everyone, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया. बाकी सब लोग बहुत बढ़िया. तो एक्चुअली ये हमारा जो
ये ब्रांड स्टार्ट हम लोग पटना से स्टार्ट किए हैं। 5 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं हमारे आउटलेट की, और अभी 18 आउटलेट हम लोग 4 स्टेट में रनिंग कर रहे हैं, और बहुत अच्छा रेवेन्यू हम लोग मेक कर रहे हैं मार्केट में, और बहुत ही एक लो इन्वेस्टमेंट के साथ हमारे ब्रांड जो सारे लोग को जो एंटरप्रेन्योरशिप जो जिनको चाहिए उनके लिए एक लो इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अच्छा F&B का जो यूनिट हम लोग सेटअप किए हैं, और इस वजह से हम लोग का बहुत फास्ट रनिंग कर रहे हैं सारा चीज़ प्रॉपर तरीके से। तो इसमें क्या है कि कई सारा हमारा जो मेन्यूज है जिसमें इटालियन हो, लेबनीज हो, इसमें सारा कॉन्टिनेंटल सारा आइटम हम लोग इसमें ऐड किए हैं। बेसिकली ये थिक शेक एक मिल्क शेक की ब्रांड है, और इस मिल्क शेक से हम लोग स्टार्टअप किए हैं फर्स्ट ईयर में। फिर सेकंड ईयर से हम लोग एक एक आइटम जो स्नैक्स से लेके सारे जिसमें हम लोग ऐड करते हुए गए हैं। तो अभी 150 प्लस आइटम है हमारे पास, जो जिसमें पिज़्ज़ा भी है, कुछ अरबिक डिशेस है जिसमें लेबनीज शावरमा भी है, कुछ अरबिक डिशेस में कुछ अरबिक स्पेशल जो बारबेक्यू चिकन्स वगैरह भी है, और बाकी सारा चीज़ तो आपको इसमें है। हम लोग की जो स्टार्टअप हुई थी तो कहीं बहुत कम मेन्यू के साथ हमारी स्टार्टअप हुई थी, अभी कई सारे मेन्यू हम इसमें एडेड है। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि बहुत एक मिनिमम रेंज का हम लोग इसको वैल्यू किए हुआ है, और इस वजह से हाई रिपीटेशन है हमारे कस्टमर की। तो यही हमारा जो स्टार्टअप हुआ, और इसमें और क्या बताएं, इसमें हमारे एक ब्रदर है, ये खुद शेफ है, तो इसी के अंडर में ही सारा चीज़ का डेवलपमेंट काम है। जितना डेवलपमेंट ऑल इंडिया लेवल पे जो भी डेवलपमेंट करना है जो हम करते हैं। जो नेक्स्ट कर लीजिए। अभी ऑलरेडी रनिंग पे जो हमने बताया कि 18 आउटलेट है, 4 सिटीज में है जी। हमारे मेन्यूज में क्या है कि कोई भी हाई स्ट्रीट में हम लोग इजीली चलने वाला आइटम है, बिकॉज कि हम एक शेक्स में ही नहीं रुके हैं, क्योंकि हमने हमारे पास कई तरह का वैरायटी ऑफ लेसी है। मतलब किसी को लेसी पीना है तो उसको लेसी मिलेंगे, किसी को फालूदा का जो फैन है किसी को फालूदा पीना है तो फालूदा भी मिल जाएंगे। स्पेशल डेजर्ट है जो हम लोग अपना बेटेड खुद क्रिएशन है वो मिल जाएंगे। और उस तरीके से कई तरह के जो ड्रिंक्स है जैसे मॉकटेल हो गया, उस तरीके से बहुत सारे आइटम है जो हम लोग खुद से क्रिएशन है। तो ये जो जैसे इसमें नेचुरल प्रोटीन भी आते हैं, जैसे जिम वगैरह लोगों के लिए नेचुरल प्रोटीन्स वगैरह भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा भी जैसे क्रिस्पी चिकन बर्गर्स हो गया, फ्रेंच फ्राइज हो गया, नगेट्स हो गया, रोल्स हो गया, shawarmas हो गया, पिज्ज़ा भी है। पिज्ज़ा में भी हम लोग का खुद का डावा है, जो भी हम लोग का बैटर जो बनाते हैं हम लोग को ओन बैटर का अपना ओन डावा है। तो यही सारा कई सारा चीज़ है जो हम लोग अपना ओन सेंट्रल किचन से हम लोग को सारा चीज़ बनते हैं। नेक्स्ट कर दीजिए। हाँ, इसमें क्या है कि हमारा जो अभी 4 स्टेट में हम लोग ऑलरेडी रनिंग कर रहे हैं। अभी हम लोग स्टेट्स हम लोग तो अभी बढ़ ही रहे हैं, 2-3 स्टेट में, और हम लोग अभी वर्किंग में है। इसमें हम लोग ऑप्शन है कई सारा है, जिसमें कि कियोस्क का ऑप्शन है, अगर मॉल्स वगैरह में भी अगर ऑप्शन मिलता है तो कियोस्क का भी ऑप्शन है, और डाइनिंग का भी ऑप्शन है, टेक अवे का भी ऑप्शन है। इसमें 3 मॉड्यूल पर हम लोग उसको चेंज किए हुए हैं, और बहुत अच्छा आरओई है। तो इसमें हम लोग का ग्रोस मार्जिन है 40% ग्रोस मार्जिन है। जितना फुटफॉल्स बढ़ेंगे 50% भी हम लोग ग्रोस मार्जिन रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि ये हाई स्ट्रीट में इजिली समर सीजन में बहुत अच्छा चलने वाला आइटम है। तो उस हिसाब से है, और बहुत अच्छा हम लोग अपना उस चीज़ को एक फ्रेश अपना चला रहे हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे एक लो इन्वेस्टमेंट का एक प्लान है।
और बहुत इजी मैनेजमेंट है, बहुत सारा स्टाफ की नीड नहीं है, स्टाफ भी कंपनी प्रोवाइड करते हैं। तो इसका वजह से तो इन्वेस्टर को सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने हैं और एक मॉनिटरिंग रखने हैं अपना, और बाकी सारा चीज़ तो इजली मैनेजमेंट हो जाते हैं इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि स्टाफ कंपनी प्रोवाइड कर रहे हैं। और नो वेस्टेज है अपना, जो भी आइटम है नो वेस्टेज प्रोडक्ट है, इसमें कई तरह कोई भी रेडी आइटम नहीं, रेडी टू मेक एंड रेडी टू ईट है, तो कहीं भी वेस्टेज भी नहीं है। तो लो इन्वेस्टमेंट एक प्रोजेक्ट है और हाई रिटर्न है और इजी मैनेजमेंट है। मार्केटिंग का टीम, आप जो भी लोकेशन हम लोग फाइनल करते हैं उस लोकेशन के रेडियस में हम लोग डिजिटली अपना कंप्लीटली जो ओपनिंग का 15 डेज पहले से हम लोग वहाँ मार्केटिंग करते हैं, और जो जो भी इवेंट्स आते हैं, जो भी ऑफर होते हैं, सारा चीज़ में हम लोग कंपनी की तरफ से जो भी डिजिटली मार्केटिंग हम लोग कंपनी की तरफ से करते हैं, तो अपना जो टीम है और सारा टीम अपना मार्केटिंग करते हैं, जो भी अपना पेपर वर्क वगैरह हो गया सारा लीगल टीम अपना आपको गाइड करते हैं। जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स है हमारे पास, जैसे डाइनिंग हो गया, टेक अवे हो गया, डिलीवरी हो गया, जैसे कैटरिंग में वगैरह में जैसे कुछ शेक्स की जैसे बल्क ऑर्डर होते हैं, तो सारी चीज़ हम लोग उस समय प्रोग्राम वगैरह में भी प्रोवाइड कराते हैं। तो डाइनिंग का ऑप्शन में क्या है कि हम लोग डाइनिंग ऑप्शन में 600 या 800 या 1000 स्क्वायर फीट के मिनिमम स्क्वायर फीट हम लोग लेते हैं। तो उसमें जो एक डाइनिंग ऑप्शन आ जाते हैं। टेक अवे में सिंपल एक 250 स्क्वायर फीट का एक हाई स्ट्रीट में 250 स्क्वायर फीट एक टेक अवे एक सेटअप करते हैं, और दोनों का थोड़ा सा रेट्स में थोड़ा सा डिफरेंस आएंगे, क्योंकि डाइनिंग का रेट्स अलग है और टेक अवे का रेट्स अलग है प्रोडक्ट्स की। बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी स्विगी जोमेटो से जो भी डिलीवरी होते हैं वो आपका है इसमें। बाकी जितना अपना हमारा जो टीम है सारा हमेशा प्रॉपर ट्रेनिंग पे रखते हैं सारा स्टाफ को, टोटल स्टोर मैनेजमेंट से लेके सारा चीज़ कंपनी अपना साइड से प्रॉपर ट्रेनिंग पे रखते हैं सारा चीज़। इसमें रेवेन्यू मैंने बताया है कि कैसे आपको रेवेन्यू क्रिएट होते हैं, अगर मिनिमम सेल का रेवेन्यू कैसे क्रिएट होते हैं, ये सारा चीज़ मैंने इसमें दिया हुआ है। जैसे स्टाफ सैलरी से लेके, रेंट से लेके, जो एक मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेके, एक फूड में जो कॉस्ट जो हम लोग को लगता है वो सारा चीज़ को लेके मैंने, अगर 3 लाख का भी हमारे एक मिनिमम सेल होते हैं, एक तो मिनिमम से मिनिमम अमाउंट हमने बताया 10,000, एक मिनिमम सेल का रेशियो लेके हमने बताया। सारे एक्सपेंस हम लोग का लगने के बाद हमें 72,000 रुपये 72,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट अपने को मिलता है। ये रेवेन्यू स्केल हमने डाला है इसमें। ये 20,000 का सेल में द सेम है, 20,000 का सेल के हिसाब से हमने बनाया है, तो इसमें आपको 1,72,000 रुपीज आपको नेट प्रॉफिट बचता है। बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बहुत जल्दी आरओई मिलने वाले इन्वेस्टमेंट। म्यूट हो गए निखिल जी, म्यूट है, अब म्यूट है निखिल जी। निखिल जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी आपका स्टोर पे, और 5 लाख रुपीज फ्रेंचाइजी फी है 3 ईयर का आपका। निखिल जी अगर फिर से बोल दीजिए, आप म्यूट में थे तो लोग सुन नहीं पाए, फिर से एक इन्वेस्टमेंट को ब्रेकअप बता। 50 lakhs का जो ब्रेकअप है, 5 लाख रुपीज फ्रेंचाइजी फी है, 5 लाख रुपीज आपका इंटीरियर कॉस्ट है, 3 लाख रुपीज आपका मशीनरीज कॉस्ट है, आपका 2 लाख रुपीज आपका ओपनिंग स्टॉक है, ऐसे 15 लाख रुपीज है इन्वेस्टमेंट। बाकी सारा मॉडल से जो हम लोग यूज करते हैं, फोको मॉडल तो अभी नहीं है, फोको मॉडल हम लोग है अभी जो भी ब्रांड सब में चला रहा है, इसमें ब्रेकअप करके हमने बताया हुआ है।
ये हमारी मेथड बताया हुआ है इसमें। इसमें हम लोग कैसे ये सारा चीज को लॉन्च करते, जो स्टार्टिंग से लेके डे 1 से लेके सारा किचन सेटअप से लेके ट्रेनिंग असेसमेंट्स लेके ऑपरेशन एक्टिविटी सारा चीज करके सॉफ्ट लॉन्च करके हम लोग इसको ग्रैंड लॉन्च करते हैं। तो थैंक्स निखिल जी। जी जी। थिंक ये बहुत ही लो केपेक्स मॉडल है फ्रेंड्स। ये आप 10-15 लाख रुपए से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं और 200-250 स्क्वायर फीट के छोटे फॉर्मेट से लेके बड़े फॉर्मेट तक का ऑप्शन है। इसका एक्सट्रीमली लो केपेक्स, लो ओपेक्स, रनिंग कॉस्ट बहुत लो है बिकॉज मिनिमल स्टाफ चाहिए होता है और सप्लाई चेन जो है पूरे ब्रांड की स्टैब्लिश है, चूंकि ऑलरेडी 4 स्टेट में काम कर रहे हैं, जिनका चाहे सप्लाई चेन पूरा स्टैब्लिश्ड है। और इसमें 30% का जैसे मार्जिन बताया निखिल जी ने, तो 30% का अपने को मार्जिन बचता है एक 200 स्क्वायर फीट की आउटलेट के लिए। सो अगर हम 3 लाख का मंथली सेल पकड़ते हैं तो 70,000 के आसपास हम मंथली प्रॉफिट कर सकते हैं। जो कि अगर पे बैक में मैं ट्रांसलेट करूं तो अराउंड 18 मंथ्स का पे बैक है। आपका जो इनिशियल कैपिटल है वो 18 महीने पे आपके घर आए। तो एंड दिस इज बीइंग लेस ऑफ स्टाफिंग रिक्वायर्ड, सारा चीज बड़ा प्रोसेस ड्रिवन है, वेस्टेज जीरो है, पिल्फरेज जीरो है। तो इसमें आपकी टाइम इन्वॉल्वमेंट भी आप लिमिटेड रख सकते हैं। इस डजंट रिक्वायर कि आपको पूरा दिन इसमें इन्वेस्ट करने की दरकार है। आप टाइम इन्वॉल्वमेंट लिमिटेड रख सकते हैं क्योंकि बिजनेस एक तरह से इडियट प्रूफ बना दिया गया है, जिसमें आपका लिमिटेड टाइम और एक सुपरविजन से आप बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। सो थैंक्स निखिल जी। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ फॉर द इन्वेस्टर्स बेनिफिट। एक तो हमने यूनिट का बताया, बट डू वी हैव अ मास्टर फ्रेंचाइज मॉडल? जो आप कोई चीज लेना चाहे, बड़ी अपॉर्चुनिटी लेना चाहे, तो आर वी ओपन टू दैट? यस सर, ऑफ कोर्स। सो मास्टर फ्रेंचाइजी कोई अगर लेता है और अगर अभी अपने करेंटली कोई है तो आप शेयर कर सकते हैं। तो अभी कौन से स्टेट्स अवेलेबल है ईस्ट इंडिया में? अभी हमारे झारखंड में मास्टर है ऑलरेडी, 1 मास्टर है हम लोगों का अभी राइट नाउ। ओके। और बिहार में आप चूंकि ऑपरेट कर रहे हैं तो वहां भी ओपन है मास्टर? यहाँ बिहार में तो हम लोग मास्टर के लिए नहीं दिया हुआ है, सिटी वाइज हम लोग दे सकते हैं। और बाकी अदर स्टेट्स ऑफ ईस्ट इंडिया आप मास्टर के लिए अदर स्टेट के लिए, मास्टर के लिए हम लोग रेडी है, क्योंकि बहुत स्मॉल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि क्या है कि सर इसमें बैंक लोन्स जैसे इजीली प्रोवाइड होते हैं, क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट जो हम लोग सपोर्टिंग टीम, अपना लीगल टीम हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट देते हैं, इजीली 10 लाख रुपीस का मुद्रा लोन से इजीली उनको अपना हाथ से इन्वेस्टमेंट जो भी है लगेगा, तो फ्रेंचाइजी फी का जो इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपीस, वो एक 1 टाइम लगना वही लगते हैं। बाकी जो स्टोर की जो इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपीस का इजिली बैंक प्रोवाइड करके दे देते हैं कस्टमर को, क्योंकि मुद्रा लोन सभी सब किसी को प्रोवाइड कर रहा है। तो बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट की इन्वेस्टमेंट बहुत फास्टली निकलने वाले, क्योंकि 2.5 किलोमीटर में इतना पोटेंशियल है, क्योंकि ड्रिंक्स आइटम है। क्योंकि समर सीजन में आप जानते हैं या विंटर सीजन में हो, विंटर सीजन में हम लोग को कॉफी स्पेशल जो चलते हैं सबसे ज्यादा, और विंटर में अपना शेक्स का भी सेल अच्छा है, और समर में सबसे टॉप सेल में रहते हैं सारा आइटम। तो बहुत ही कम रेंज में बहुत अच्छा एक रेवेन्यू, एक स्टोर का कम से कम सालाना 2 करोड़ का सेल है। तो वो एक बहुत अच्छा एक मार्जिन मिल जाते हैं, बहुत अच्छा एक रेशियो आपको रेवेन्यू मिल जाते हैं। तो इस हिसाब से ग्रेट। आई थिंक ये मुद्रा लोन वाली अपॉर्चुनिटी, तो इसमें क्या अपने ब्रांड की तरफ से कोई असिस्टेंस रहता है इन्वेस्टर को? पटना के लिए बेसिकली हाँ लीगल टीम है। इवन बैंक्स भी जाते हैं, बैंक्स वगैरह में भी हमारा कुछ लोग से अच्छा है, तो वहाँ जाते तो लोगों को भी वो लोग भी सपोर्ट करते हैं कि इस ब्रांड के पास जाइए, वहाँ से प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके आके इस ब्रांड का, जिस ब्रांड का भी आपके लिए काम करोगे तरीके, क्योंकि यहाँ पे SME करके है SBI का, तो लोग जाते हैं तो वहाँ से भी अच्छा एक सपोर्ट दे देते हैं। तब बैंक में कोई इश्यूज नहीं, हम लोग का प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा हो जाते हैं, तो वहाँ से 10 लाख रुपीस रिलीज होते हैं। फिर धीरे धीरे अपना काम चालू हुआ, 30 to 40 डेज में कंप्लीट, और 1 मंथ के अंदर नेक्स्ट मंथ से अपना रेवेन्यू स्टार्ट।
तो ये आप जिस दिन जगह फाइनल करते हैं उससे 45 डेज में स्टोर रेडी हो जाता है, लॉन्च कर सकते हैं जी 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 30 डेज तो मिनिमम होते हैं, मैक्सिमम 40 डेज है। ग्रेट। और जो इन्वेस्टर है, जो फ्रेंचाइजी है, उनको क्या कोई लोकल टाइप्स करने पड़ते हैं, वेंडर टाइप्स करने पड़ते हैं कि सारा चीज आप करके सारा देते चीज हैं? कंपनी प्रोवाइड करके देंगे आपको। आपको तो किसी भी तरह का सर हेडेक नहीं है। हेडेक सिर्फ ये है कि आप अपना मॉनिटरिंग रखिए अपना शॉप की, बाकी सारा चीज हमारे शेफ और बाहर की जो मैनेजर है वो हैंडल करेंगे। बस आपको अपना एक क्या होता है कि एक मॉनिटरिंग रखना जरूरी होती है, क्या ऑर्डर कंपनी को जा रहे हैं, क्या पेमेंट कंपनी को देना है, इस तरीके से खाली एक मैनेजमेंट में अपना रहना जरूरी है, बस दैट्स इट। और कोई भी इनको हेडेक नहीं है, क्योंकि हम लोग लोकल जो परचेज होते हैं जैसे फ्रूट्स वगैरह हो गया, वेजिटेबल हो गया, चिकन नॉन वेज का आइटम वगैरह कुछ आइटम है जो हम लोग खुद अपना टीम जाके नियर बाई के लोग से बात करके हम लोग को कितना कैसे क्या चाहिए वो सारा चीज हम लोग वहाँ टाई अप करके शॉप में नंबर दे देते हैं, इस नंबर पे फोन करके आप मंगवा लीजिए। कुछ ऐसे वेंडर्स है जो हम लोग ऑल इंडिया लेवल का, वो वेंडर आपके पास डे वन से आपके साथ काम करना शुरू करेंगे। बाकी कुछ आइटम है जो हम लोग को पटना सेंट्रल किचन से जाना है, जो स्पेशल आइटम है वो आइटम भी आपको यहाँ से ट्रांसफर किया जाएगा। तो कहीं भी कोई हेडेक नहीं है। अच्छे एक लोकेशन सेलेक्ट करना है जो हाई स्ट्रीट एरिया पे जो रनिंग कस्टमर्स की एक अच्छा फुटफॉल लोकेशन पर अपने को शॉप लेने हैं, और 250 स्क्वायर फीट भी अगर मिनिमम हो तो एक हम लोग मैक्सिमम आइटम बना सकते हैं। अगर 300 स्क्वायर फीट 350 स्क्वायर फीट हो तो कुछ सिटिंग्स हम लोग थोड़ा बहुत हम लोग सिटिंग्स दे सकते हैं, कुछ लोग को अंदर बिठा सकते हैं, एसी वगैरह हम लोग लगा के थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट भी मिल जाएंगे गर्मी के टाइम पर। तो उस तरीके से इस चीज में हम लोग कवर अप कर सकते हैं बहुत लो इन्वेस्टमेंट में, बहुत अच्छा ROI। क्योंकि 18 मंथ जो हमने मैक्सिमम लिखा है, अब बहुत सारे लोगों का 8 मंथ में भी निकला है, कि बहुत लोगों का 6 मंथ में भी निकला है। तो स्ट्रीट के ऊपर डिपेंड करता है कि स्ट्रीट कैसे है। करेक्ट। आई थिंक दिस इज ये फॉर्मेट हाई फुटफॉल एरिया में खुल सकता है। So, सारे हाई स्ट्रीट मॉल्स अराउंड यूनिवर्सिटी के आसपास जहाँ पे हम हाई फुटफॉल देखते हैं थ्रू आउट द डे। प्रोडक्ट की क्वालिटी की डिलीवरी की गारंटी कंपनी देती है। बाकी फुटफॉल कस्टमर आ जाए उसके बाद वो बस खुश होके जाएंगे, वो 10 कस्टमर को लेके आएंगे, वही एक रिपीटेशन ही है। ये जो इंडस्ट्री का यही रिपीटेशन, क्योंकि हाई रेस्टोरेंट्स में कस्टमर एक बार जाएंगे नेक्स्ट मंथ जाएंगे, लेकिन हमारे जो आइटम है उनको डेली आना है, क्योंकि वो डेली पीने टाइप का आइटम है, तो इसलिए डेली आना ही पड़ेगा। भले स्नैक्स खाए चाहे नहीं खाए, ड्रिंक्स आइटम तो खाने के लिए आना ही पड़ेगा, पीने के लिए आना ही पड़ेगा। करेक्ट। जस्ट लास्ट वन, अपना एग्रीमेंट पीरियड क्या है निखिल जी? फ्रेंचाइज एग्रीमेंट पीरियड 3 ईयर का है। 3 ईयर का, उसके बाद क्या रिन्यू फिर फ्रेंचाइजी फी चार्ज करते हैं, कैसे करते हैं? कोई फ्रेंचाइजी फी चार्ज नहीं करते हैं। 10,000 रुपीज की अपना CA लोग का जो चार्जेस है, जो पेपर वर्क की, दैट्स इट। और कोई चार्जेस हम लोग ये वन टाइम के लिए हम लोग लेते हैं, जो जिस समय हम लोग लॉग इन होते हैं। क्योंकि हमारे जो ब्रांड है वो हम बहुत हाई स्केल के लोगों को सेलेक्ट नहीं करते, क्योंकि जो मिडिल क्लास लोग जो एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनके पास आइडियाज नहीं है, वो अगर लोन लेके भी करे या कुछ अपना सेविंग्स का थ्रू भी करे, तो वो लोग हम लोग कनेक्ट करके इनको हम लोग लाना चाह रहे हैं। क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हम बहुत बड़ा बिजनेस तो नहीं कर सकते, स्मॉल इन्वेस्टमेंट से हम एक बिजनेस कर सकते हैं, वो कुछ अच्छा बिजनेस हो, कुछ अच्छा ब्रांड हो। तो उसी को लेके फोकस करते हुए हम लोग मैक्सिमम काम करते हैं, क्योंकि वही लोग खुश रहेंगे, वो लोग को एक स्पेशल इनकम मिल जाएंगे, तो वो लोग ज्यादा खुश रहेंगे। Correct. So friends, we have presented two spectrums of brand. One was a coffee cafe with a higher investment and higher ROI, and second was a low capex, thick steaks brand, which was with a good ROI. And so we have complete both the business formats are great. Both have been built by brother duo, and both are more than 6 years in operation. So they have cracked the format. They have done it, and now they want to share the success story with everyone. So we would be sharing our toll-free number and the mail ID where you can reach out to with any of your queries. And if you're interested to meet the brand owner or connect with them, our team would be more than happy to take this forward. So before I pass on to Amrita to closing comment, I would like Nikhil ji, कुछ last message आप कुछ देना चाहते हैं investors को? बैटिडो एक फैमिली जो हमने स्टार्ट किए थे 2018 में,
तो हमारे एक मिशन था कि हमारा पूरा ऑल इंडिया लेवल पर हमारा जो टेस्ट है, जो हम लोग खुद का क्रिएशन के थ्रू जो हमने बनाया हुआ रेसिपी के जो टेस्ट है, ऑल इंडिया लेवल पे पहुंचे। और हमारा एक मिशन और थे कि जो एक मिडिल क्लास की जो फैमिली है, स्पेशली अगर मान लो कि हर एक मिडिल क्लास के एक नॉर्मल सैलरी पेड जो स्टाफ लोग होते हैं, तो उन लोग के लिए स्पेशली हम लोग बनाया गया था कि इसको सब लोग एंटरप्रेन्योर बने और सब लोग को एक इजी, क्योंकि रेट्स भी हमने 90 रुपीज की, 80 रुपीज की, 70 रुपीज की या 120 रुपीज की, हमने एक बहुत मिनिमम रेट रखे हुए हैं, और भी हाई क्वालिटी और हाई क्वांटिटी के साथ हम देते हैं। ये नहीं कि हमने 200 ग्लास की एक शेक देते हैं, हम लोग 350 ml की एक, मतलब कस्टमर को उस लेवल का रखे हैं कि बहुत ही अच्छा लगे, और टेस्ट में भी और क्वांटिटी में भी और रेट में भी। तो बहुत इजीली चलने वाला एक मेन्यू हमने क्रिएट की है। इसलिए हम लोग को यही कहना है कि हमारे जो ब्रांड के साथ अगर टाई अप हो जाए तो हम लोग अपना टीम की पूरी सपोर्ट हर तरफ से रहेंगे, चाहे लीगल टीम हो, चाहे फूड का मैनेजमेंट का टीम हो, सब जगह से अपना फुल सपोर्ट अपना कंपनी की तरफ से हमेशा है। और इसको हर जगह तक हम लोग को पहुंचाना मिशन है। और बाकी सारा डिटेल्स तो आने सर देंगे इसमें जो भी चीज़ है। बाकी वर्बली मीटिंग में भी हो जाएंगे, जो भी आपको जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं जो इसमें ज्वाइन करें। थैंक्स निखिल जी। आई थिंक हमारी टीम इन्वेस्टर्स की जो भी इंक्वायरी आती है वो आप तक रीच आउट करेंगे इसके बाद। जी 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 जी, ट्राई टू कनेक्ट एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू अगेन सब लोगों को। Amrita, over to you for closing comment. So thank you friends for joining us. For any further details, please connect us on the toll-free number, and our customer care email ID is also given. Thank you so much. Wish Thank you all you, Amrita ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, Anand sir.